गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करछि मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा किछिटा हाइपोथेसिस उपरे मु आनिछि जोटा कि हमर कोर पेपर 4 अच्छी सेल बायोलॉजी तार यूनिट 3 रो। तो यही जो हाइपोथेसिस गुड़ाक अच्छी आम पाखापाखि 4टा हाइपोथेसिस ना केतेमती देइछि ता विषय आम पढ़िबा। तो आशा रखुछि तुमको वीडियो पसंद आसथिबो। आउ जो माने भी मो चैनल रे नुआ अछ सेमान को मो प्रीवियस क्लास रो लिंक दे देबी ताले तुम कि प्रीवियस क्लास गुड़ा को भी देखि पारिबो हैला। तो ता पूर्व मो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद थिले लाइक और शेयर करिवो। तो प्रथम हाइपोथेसिस है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल हैला। तो तार सेमी ऑटोनोमस हाइपोथेसिस कोन ता विषय में जानिबा हैला। तो फास्ट देखो बाय वर्च्यू ऑफ फैक्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए as well as राइबोसोम and are able to synthesize their own protein हैला। the semi autonomous organelle is applied to them हैला। तो जेहेतु एमाने कौन जी माइटोकॉन्ड्रिया गोटे एमिति ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल जार के निजर डीएनए अच्छी आउ ता छड़ा निजर तार राइबोसोम भी अच्छी आउ तार सी तार निज प्रोटीन को निजे सिंथेसाइज करि पारे हैला। तेणु आम ताकू सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहि परिबा हैला। हाउएवर देयर बायोजेनेसिस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द न्यूक्लियर जीनोम एंड आर बायोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑन द ग्राउंड ऑफ साइटोप्लाज्म। There are however some difference between the mitochondrial protein synthesis and protein synthesis in the cell हैला। तो किछिटा डिफरेंस अच्छी प्रोटीन सिंथेसिस रो हैला। तो कौन कौन देख गोटे हूँ देख ओनली 22 डिफरेंट tRNA आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया आज एगेंस्ट मोर देन 40 tRNA अवेलेबल फॉर द ऑर्डिनरी ट्रांसलेशन। तापर देखो नहीं देखो फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द जेनेटिक कोड यूज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इज आइडेंटिकल टू दैट यूज बाय द न्यूक्लियर डीएनए विथ टू differences है ना। जो UGA स्टॉप कोडन फॉर न्यूक्लियर डीएनए इज रीड आज कौन ट्रिप्टोफान इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड बी है ना। तापर देखो आउ गोटे AUA इज रीड आज कौन मिथियोनाइन इन द माइटोकॉन्ड्रिया बट आइसोल्यूसिन इन द न्यूक्लियर डीएनए कहवा माने है देखो। तो फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ जेनेटिक कोड यूज बाय माइटोकॉन्ड्रिया कौन आइडेंटिकल माने कौन मिसे टू दैट यूज बाय द न्यूक्लियर डीएनए विथ टू डिफरेंट। तो दुईटा डिफरेंट देखा जाए गोटे हूँ कौन प्रथम हूँ देखो UGA। तो UGA को स्टॉप कोडन बोली कह जाए न्यूक्लियर डीएनए हैला। किंतु एठी आमे कहबा कौन ताको ट्रिप्टोफान बोली कहबा माइटोकॉन्ड्रिया रे। आउ दुई नंबर जो AUA ताको जो प्रोटीन टाको आमे कौन कहू प्रोटीन कोडन को आमे कहू मिथियोनाइन कोठी माइटोकॉन्ड्रिया रे किंतु आइसोल्यूसिन बोली कहबा कोठी न्यूक्लियर डीएनए रे बोली कहबा। तो एटा किछटा डिफरेंस अछि सेमान को भितरे। तो तापर नेक्स्ट देखिबा बायोजेनेसिस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो two main mechanism have been postulated for the biogenesis of mechanism कौन कौन गोटे अच्छी ओरिजिनेशन डिवीजन फॉर पेरेंट माइटोकॉन्ड्रिया तापर ओरिजिनेशन डी नोवो बाय सिंपलर ब्लॉकिंग ब्लॉक है। तो ओरिजिन बाय डिवीजन कौन देखो माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डॉटर सेल ड्यूरिंग माइटोसिस एंड देयर नंबर इंक्रीज ड्यूरिंग कौन इंटरफेज है। It has been observed by time lapse है cinematography that mitochondria gradually elongate and then fragment into smaller mitochondria. This has been verified in the choline deficient mutant of the neurospora where it was labeled with radioactive choline and radioactivity follow in the mitochondria of the second and the third generation by the autoradiography. It was found that all the mitochondria of the original progeny were labeled but the mitochondria of next generation हम जो देखिबा next generation तारो contain about half of the radioactivity. This indicate that the mitochondria are divided है। तेणु एथिपाई जना पड़ा माइटोकॉन्ड्रियाटा केमिति डिवाइड होइछि। ओरिजिन डी नोवो कौन तो ओरिजिन डी नोवो होला दिस हैज बीन सीन इन द
ईस्ट सेल देखा ईस्ट सेल कौन है ग्रोन जोटा आम सॉरी एनारोबिकली है लैक ऑफ कंप्लीट रेस्पिरेटरी चेन है जोटा आम साइटोक्रोम बी आउ सी आर एब्सेंट अंडर द EM शो है जोटा आम नो टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया हाउएवर when the yeast cell are placed in the air the mitochondrial membrane present fuse unfold and form true mitochondria that contain the cytochrome है this observation is in the agreement in which the de novo synthesis theory of the mitochondria biogenesis है तापर symbiotic hypothesis कौन जानिबा है तो symbiotic hypothesis कौन द देखो at the end of the last century scientists like Altman and the Skimper on purely morphological ground speculated that mitochondria and chloroplast might be intracellular parasite that have established a symbiotic relationship है ता माने कौन तांको मतरे एमाने एमाने ए दुईटा कौन होची एमान दुई जण कौन होची इंट्रासेलुलर पारासाइट टाइप रो थांती एवं सेमाने दुई जण सिम्बायोट रिलेशनशिप रखी थांती का सहित यूकारियोटिक सेल सहित है द बैक्टीरिया वेर थ्रो दैट टू हैव ओरिजिनेट द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द ब्लू ग्रीन algae द क्लोरोप्लास्ट है तो तापर देखो in modern cell biology with the recognition that these organelles have a certain degree of autonomy this hypothesis has been reframed according to this revised theory the original host cell is conceived to be an anaerobic organism deriving its energy from the glycolysis तार glycolysis process तार energy से पाइला and the parasite contain reactant of the Krebs cycle and the respiratory chain it is therefore able to carry on the respiration and the oxidation photorespiration है photorelation है the symbiotic hypothesis is based on many similarities between mitochondria and chloroplast and prokaryotes है कौन तो फास्ट देखो द सिमिलरिटीज ऑफ द लोकेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है सर्टेन बैक्टीरिया हैव मेम्ब्रेनस प्रोजेक्शन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मिंग द मेसोजोम these mesosomes are comparable to mitochondrial crest and have been shown to contain the respiratory chain thus the inner mitochondrial membrane and the crest may represent the original symbiont enclosed within the membrane of the cellular origin है तापर देखो the mitochondrial DNA is circular DNA थाए है as in case of the chromosome of the prokaryotes है तापर देखो 4 नंबर देखो देइची तीन नंबर प्रोटीन सिंथेसिस इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया रे भी होता है एंड बैक्टीरिया इज इनहिबिटेड बाय द जो क्लोराम फेनिकल whereas the extra mitochondrial protein synthesis of higher जोटा cell is not affected है तब देखो माइटोकॉन्ड्रिया there is evidence of DNA dependent RNA synthesis है which indicate the partial autonomy of this cell organ तो सेमान देखिले एठी कोन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस करबा पे देखिले तार किछटा फैक्ट अछि जोथि पे एमन कोन जानले जोडा जानले कि एमन को पार्शियल ऑटोनोमी एमन को पाखे देखा जाय बोले सेमान जानिले हैला तापर नेक्स्ट देखो जदि 5 नंबर देखिबा देखो another support of this possible support of the prokaryotic origin of mitochondria and chloroplast comes from the fact that intracellular symbiosis is found in nature too है जो paramecium have been found to contain bacteria है तो एटा मत से देखा पाइले तो एंडोसिम्बायोसिस ऑफ ए फोटोसिंथेटिक प्रोकारियोट confer on one hand to the host
the ability of the capture light energy to synthesize various products, and on the other hand provide the for the prokaryotes है a constant environment in which to grow and reproduce है तब in evolutionary term it is possible to believe that symbiotic relationship could have evolved into the presence of situation है present situation को देखिए ना होता है in which the organelles have a certain degree of autonomicity है but depend on the nucleus and the cytosol of the cell for the synthesis the most of there is specific component है एकदम सिंपल वर्ड अच्छी है ताको बुझापी बुझीज तो मैंने है एकदम सिंपल वर्ड अच्छी है मोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन कौन देख तो बेसिकली देख कौन द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कौन एनर्जी ट्रांसडक्शन ऑर्गेनेल है एनर्जी मिलता है इन माइटोकॉन्ड्रिया देयरफॉर मेजर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ द सेल मेटाबॉलिज्म penetrate are convert into the ATP to be used in various activity of the cell. The entire process require the entrance of ADP, oxygen, inorganic phosphate and bring about the ATP, water and carbon dioxide. है तापर देखो chemical energy of nutrient is stored in the covalent bond between the atom and each molecule. This energy is not released suddenly but it made available in the stepwise and control manner है तो step wise एटा रिलीज होता है एक सडनली सबूतक रिलीज हुए ना है तो नेक्स्ट देखो the process of the energy transformation in the mitochondria occurs in the following three coordinated steps गोटे होची Krebs cycle, respiratory chain or electron transport system और गोटे phosphorylating system. तो Krebs cycle कौन होता है carried out by the series of soluble enzyme present in the mitochondrial matrix which produce carbon dioxide by decarboxylation and remove electron from the metabolism. तापर देखो रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन which capture the pair of electron and transfer them through the series of electron carriers. This finally lead to the formation of water by combination with the activated oxygen. Activated oxygen तो combine करी water formation करला. तब देखो phosphorylating system कौन is tightly coupled with the respiratory chain which at 3 point give rise to ATP molecule produce करता है तो Krebs cycle बा TCA cycle बा citric acid cycle कौन हम देखिबा है तो देखो फास्ट देखो takes place in the mitochondria matrix देखा जाए it is the first step in common pathway for the degradation of fuel molecule. These molecule are acted upon कौन metabolically कौन to produce acetyl group which takes place in the cycle and acetyl coenzyme A. The primary function of TCA cycle is oxidized acetyl group that enter the cycle. The reaction from a cycle becomes the acetyl group is not oxidized directly but after it has been covalently added to a larger molecule oxaloacetate which is regenerated at the end of 1 turn of the cycle है तो नेक्स्ट देखो the cycle becomes with the reaction between acetyl coenzyme तापर देखो and oxaloacetate to form tricarboxylic acid called citric acid. Each turn of the cycle generate two carbon dioxide molecule and 4 pair of the hydrogen atom which enter the respiratory chain. Out of these 3 pair accept by NAD and 1 pair accept by FAD है तीनटा पेयर जो तीनटा पेयर अच्छी से कौन है ये जो तो एक्सेप्ट कला कौन NAD द्वारा एक्सेप्ट होला एवं FAD द्वारा गोटे एक्सेप्ट कला है तब देखो it takes
2 ton है दुईटा टन of the cycle to metabolize the two acetate molecule that are produced by the glycolysis है glycolysis produce है from one molecule of the glucose. A total 30 molecule of ATP are generated from each glucose molecule. जोटा कि आम प्लस टू अलरेडी क्रेब साइकेल विषय आम जाचु है तो यहाँ हूँ तार क्रेब साइकेल स्ट्रक्चर देख जोटा कि आम प्लस टू रे क्रेब साइकेल अलरेडी पढ़ीचु तुम जाच समस्ते है एक तुम स्क्रीनशॉट नहीं डायग्राम कर पार तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन देख देखिए स्टार्ट विथ NAD+ which reduce NADH है this followed by the flavoprotein coenzyme Q and series of cytochrome ending with oxygen. The respiratory chain and the phosphorylating system are in the inner mitochondrial membrane. The component of the respiratory chain may be separated into multimolecular complex in which lipid are essential for the activity है lipid एथे बहुत दरकार. Complex I or NADH-Q reductase is the largest and has 15 subunit मन रखिता है it contain FMN and 6 iron phosphor center. The NADH reaction site is at the M site matrix जोटा है तापर देखो complex 2 or succinate Q reductase contain FAD and 3 iron sulfur center. This complete transfer electron from the succinate to CO Q. नेक्स्ट देखो कॉम्प्लेक्स आम 3 जो देखा और QS टू साइटोक्रोम रिडक्टाज कंटेन साइटोक्रोम B1 C1 आउ 1 iron sulfur protein. Cytochrome C is on the cytosol side. Complex 4 or cytochrome C oxidase is a large complex with cytochrome A and 2A3 and 2 copper atom. तो यहाँ हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तुम स्ट्रक्चर देखा पाच जो जगह देख NADH अच्छी लॉस कला गोटे हाइड्रोजन को NAD+ है FADH2 अच्छी से FAD बाहर है तो ये दीटा हाइड्रोजन सहित ऑक्सीजन मिसिगला जोटा आम कौन वाटर रिलीज कला से है सेमती ADP सहित गोटे फॉस्फेट मिसला ATP प्रोड्यूस कला तो मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन में कौ प्रकार मेटाबॉलिक फंक्शन होता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस बिटवीन मेम्ब्रेन एटा को देखीदेव है बहुत इंपोर्टेंट आउटर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड फैटी एसिड तापर देख फैटी एसिड एलोंगेशन केमती होता है इनर मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स space between the membrane रे phosphorylation of nucleotide mitochondrial matrix रहता है pyruvate oxidation TCA cycle beta oxidation of fat तापर देखो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी कौन बा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस तो यहाँ हूँ स्ट्रक्चर प्रथम देखी दियो है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अच्छी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अच्छी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दुईटा भितर आउटर मेम्ब्रेन आउ इनर मेम्ब्रेन मझे ता भितर सबुठ भितर देख मैट्रिक्स अच्छी है प्रोटॉन आर पम्प्ड अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन आज इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द रेस्पिरेटरी चेन है तो देख इन केमी ऑस्मोटिक थ्योरी इज अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल लिंक बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड phosphorylation है it was proposed by Peter Mitchell in 1961 he was awarded Nobel Prize in 1978 for this work से Nobel Prize पाइथिले Chemi Osmotic refers to the movement of chemical ion across semi permeable membrane
डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट है। तो केमी ऑस्मोटिक माने कौन जोटी कि हूँ केमिकल आयन गुड़ाक मुव कर कौटी मुव कर जो आमर जो इनर मेम्ब्रेन तुम देखुच से तुम कौन जो केमिकल आयन गुड़ाक मुव कर कहीं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जोड़ा हूँ फ्रॉम द एरिया हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस अच्छी माने आम सब जाचु कौन हायर रु लोअर कंसंट्रेशन को पार्टिकल्स मुव करता है। केमी माने केमिकल एटा आम जानलु तो जदि आम अलग करवा केमी मान हूँ केमिकल ऑस्मोसिस मान हूँ हायर कंसंट्रेशन रु लोअर कंसंट्रेशन को पार्टिकल्स माने मूव करवा है। तो यहाँ हूँ केमी ऑस्मोटिक जोटा कि आमर बेसिकाली परमिएबल मेम्ब्रेन देखा मिलता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखा मिले सिमिलर टू मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल बाय द ऑस्मोसिस है। तो जोटा हूँ आम जाचु वाटर मॉलिक्यूल जमी ऑस्मोसिस रे एंट्री करता है केमिकल गुड़ाक एंट्री करने को केमी ऑस्मोटिक बोली कहगला। An example of this is an generation of ATP by the movement of hydrogen ion across the membrane during cellular respiration or photosynthesis। तो बेसिकली एटा केमिति हुए एटा होची जेतेबेले एटीपी हमको केमिति मिली थाए जेतेबेले हाइड्रोजन आयन नो मूवमेंट ही थाए हैला हाइड्रोजन आयन मूवमेंट ही जिवो एक्रॉस मेम्ब्रेन एवं केतेबेले गई थाए सेलुलर रेस्पिरेशन बेलको बा फोटोसिंथेसिस बेलको ही थाए। The Chemi Osmotic theory deal with the generation of ATP by ATP synthesis है तो ATP केमती synthesize है कि मिले ताकू ही हमें केमी ऑस्मोटिक थ्योरी बोली कहू। केमी ऑस्मोसिस इन्वॉल्व द पंपिंग ऑफ द प्रोटॉन थ्रू स्पेशल चैनल इन द मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम इनर टू आउटर कंपार्टमेंट है इनर व आउटर कंपार्टमेंट को प्रकार पंपिंग करना प्रोटॉन को मूवमेंट करा जाए तार उपरे होची केमी ऑस्मोटिक थ्योरी है। तो देखो द प्रोटॉन originating from the electron transport chain are translocated by the respiratory chain across the membrane from the M side to the C side of the mitochondrial inner membrane। According to this theory this translocation create pH change है हमको pH value change है जाए and membrane potential। Since the inner mitochondrial membrane is highly impermeable to proton है this can be reached the M side only through the proton channel of the ATPase है जेहेतु टोटल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टा इम्परमिएबल क्या को इम्परमिएबल हाईली इम्परमिएबल जो प्रोटोन को है तेणु ये कौन करे डायरेक्ट जाकि एम साइड पाखे पहुँची जाए एम साइड हूँ कौन जो जगह कि ओनली प्रोटोनटा तार मुवमेंट कर से एम साइड को जाकि पहुँची जाव व्हेन H प्लस move from the C side to M side the F1 ATPase operating this reverse catalyze the ATP synthesis conversely when the F1 ATPase hydrolyzed ATP है it function as a proton pump से proton pump करे and the eject H plus from the M side to C side है for each NADH that is oxidized 6 protons are translocated through the inner membrane. These 6 hydrogen ion when returning to the M side through the F1 ATPase gives us 3 ATP molecule तेणु थर करे से 3टा ATP molecule produce करता है। According to this theory the inner membrane of the mitochondria acts as the transducer converting the energy provide the electrochemical gradient into the chemical energy of ATP है the inner mitochondrial membrane is impermeable to both hydrogen ion भी होबो OH minus को भी होबो है therefore if pH difference है are established across the membrane they act as a energy rich gradient है तेणु pH टा को डिफरेंस करबा को पड़ी थाए कारण जेहेतु एटा होची इम्परमिएबल मूवमेंट करि पारे ना हाइड्रोजन बा आमर OH ग्रुप को से मूवमेंट करि पारिबो नाही तेणु pH टा को डिफरेंस करबा को पड़ी थाए हैला एक्रॉस मेम्ब्रेन रे जहा द्वारा कि एटा होची हाईली जोटा हमें कहि परबा एनर्जी रिच ग्रेडिएंट हिसाब रे एक्ट करिवो हैला। तो व्हेन प्रोटॉन जोटा होची आर eject towards the cytoplasmic side C side and OH remain on the matrix side
that create a difference of pH है low pH on C side and high pH in N side है मन लगी तो which result in the electrical potential. The enzyme ATPase synthesize ATP under the influence of the vectorial field of the protein motive force generated by the transfer of the electron through the respiratory chain and these proton on the C side है तो ATP synthesis structure केमती हम देखा है तो बेसिकली देखो ATP synthesized by the precursor of the ADP by the enzyme ATP synthetase also called complex B है this enzyme found in the sister and inner mitochondrial membrane है तो sister by inner mitochondrial membrane रे ये enzyme मिलता है तब तो ATP synthesis has two part F0 और F1 the part embedded within the membrane of the mitochondria is called F0 है F0 is made up of C ring and subunit A. Two band of F1. This is the motor that is power of hydrogen ion flowing across the membrane. है तब देखो next is part within the mitochondrial is called F1. है this is made up of subunit alpha, beta, gamma और delta. F1 has a water soluble part है F1 water soluble part अच्छी which can hydrolyze ATP को hydrolyze करे. This is another motor that is used as generate ATP. तो ATP एटी generate है सेम देखो जदि F0 region देखा is similar to DNA helicase रो जहाँ काम यार मध्य से काम कौन enzyme is unzip DNA है enzyme which unzip DNA so that it can be used as a template of replicate आमे जो प्लस टू रे पढ़ीचु जे डीएनए हेलिकेज एंजाइम द्वारा कौन होता है डीएनएटा अनकॉइल होता है अनजिप होता है तो डीएनए टेम्पलेट तैयारी हो पारे रेप्लिकेशन दे व्हाइल F1 ATPase region is similar to H plus motor that allow it to move है तो यहाँ हूँ तार स्ट्रक्चर आम देखा पाचु है तो यहाँ तो बेसिकली यहाँ रहा आमर टोटाल जहाँ भी हाइपोथेसिस अच्छी हाइपोथेसिस विषय आम पढ़ले है आशा करूँ तुमको वीडियो पसंद आसो नेक्स्ट क्लास नुआ गोटे पाठ आने से थैंक यू।